You can't really write all the products, and you have to show what is major, right? All the products, okay? And then you have to show which one is major, which one is minor. Send the answer on my WhatsApp, okay, once you're done.
Sara, looking at your answer. First one correct, second one fine, third one is correct, fourth one में आप गलती कर गए. See what is wrong in the fourth one, Sara? अरे बाप रे, सामने आपने कैसे बनाया है? ओके फाइन, ठीक है, नजर आ रहा है. सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए सामने आपने. सेकंड वाले में एक और बनेगा, बाकी मेजर और माइनर ठीक है आपका. Samya, I am saying that in the second structure, your answer is not right. There should be one more structure, please see. That will be the major one. Okay, sir. Razan, and I'm looking at your answers now. Okay, Razan, for the first one, नहीं, पहला वाला आपका सही नहीं है. You see, both the structure that you have made, they are same structures only. Okay. सेकंड वाले में आपने मेजर ठीक बनाया है. थर्ड में भी आप नहीं, थर्ड में आपका मेजर ठीक है. थर्ड में और मेजर इसमें. इन द फोर्थ, देखिए हमको, देखिए आपने इतने सारे डैश लाइन बना दिए ना. हाउ वुड आई नो विच इज डबल बॉन्ड एंड विच इज नॉट? राइट रजान, है ना? I know that you are counting the alkyl groups, but you see my problem. जो आपका आंसर चेक करेगा उसको क्या लग सकता है, ये सारे डबल बॉन्ड है कहीं कहीं पे भी जो है लाइंस, राइट? तो उसको आप देखिए कैसे ठीक कीजिएगा. काउंटिंग भी जरूरी है, नॉट सेइंग दैट्स बैड इफ इट्स रॉन्ग. और एक फातिमा है, फातिमा तो बनाती है पेंसिल से, उनको कॉपी नहीं गंदा करना है, राइट फातिमा? या फिर ये ब्लैक पेन है? पेंसिल. पेन है या पेंसिल है? ये पेंसिल. पेंसिल ही है, अच्छा. माइनर मेजर ठीक है, माइनर मेजर ठीक है, मेजर माइनर ठीक है. हाँ, आपने ध्यान रखा है उस चीज का. लेकिन दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है. दोनों, जो फोर्थ का आपने दो स्ट्रक्चर बनाया फातिमा, बोथ ऑफ देम आर सेम ओनली, दे आर नॉट डिफरेंट. ओके. Yes, एंड sir. वाफिया, योर फर्स्ट वन करेक्ट, सेकंड वन करेक्ट, थर्ड वन करेक्ट, फोर्थ वन इज रॉन्ग. देखिए क्या गलती की है आपने फोर्थ, चौथे वाले में.
सारा, अरे नहीं सारा, वो गलत है, वो फिर भी गलत है ना। नंबर ऑफ कार्बन आटम घट थोड़ी ना जाएंगी सारा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट सारा? Yes, sir. चलिए ठीक है। सामने योर सेकंड वन इज नाउ फाइन। ओके, now please see, for the first few structures it's fine, everything is fine, majority। और फोर्थ को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। now I'm writing the carbon atoms 1 2 3 4 5 6 7। which carbon atom contains halogen? Which carbon atom contains halogen? Tell me guys. 5. 5, very good। and what are the adjacent carbon atoms? Tell me। 7 and 6. 7 6 बस, और नहीं है कोई adjacent? 2. 2 भी तो है, right? 2 भी है adjacent, है ना? अब I will number them। so you have this adjacent carbon, and since both of them are same, right? 6 and 7 were same, but 2 is different। सही है? Yes or no? Yes. Correct guys? Okay। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को लगेगा कि दो स्ट्रक्चर बन जाएगा सर, दो डिफरेंट कार्बन है तो, है ना? लेकिन ध्यान रखिए, what should we remove from the carbon which is containing halogen? यहाँ से क्या निकलेगा? ग्रीन वाले से कार्बन से what should I remove? remove what? Tell me। Br. वेरी गुड, Br। ठीक है। और यहाँ पे तो हमारे पास क्या था? CH3 था, यहाँ पे CH3 था, राइट? 6 और 7 दोनों में, तो किसी एक को भी ले लीजिए आप, एंड यू कैन से दैट फ्रॉम हियर व्हाट शुड आई रिमूव? एडजेसेंट कार्बन से क्या One रिमूव करना रहता है? hydrogen. वेरी गुड, रिमूव हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अच्छा, लाल में बताइए हाइड्रोजन है? नहीं। नहीं, दिख गया सबको? 4 बॉन्ड था, ऐसे ही बन गया, हाइड्रोजन की जगह ही नहीं Yes. है, राइट? दैट इज व्हाई यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होगा ही नहीं, सो यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस वन। सो देयर विल बी ओनली वन प्रोडक्ट हियर, एंड द प्रोडक्ट विल बी 1 2 3। यहाँ पे तो ये सारे ऐसे ही रहेंगे, दिस हैज इस तरह से, और एक डबल बॉन्ड आप यहाँ पे इस तरह से बना दो, बस दिस विल बी योर वन प्रोडक्ट, दैट इज गोइंग टू बी योर ओनली प्रोडक्ट हियर। बाकी में आपके पास जो बनेगा, So what about the one I did? आपने क्या किया? आपने ये किया होगा, ये ना? No, I didn't do that. फिर आप क्या किए भाई? एक सेकंड, Yeah. अरे यही तो किया है आपने, और क्या किया? Yeah. So this is correct or wrong? तो दोनों सेम ही है। Okay. नहीं है सेम? अब बताइए। Yeah, it is दोनों का same. सेम ना, ऐसे देख के नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन कभी भी होता है ना, सो ट्राई टू राइट द नेम फॉर इट, दोनों का नाम सेम आएगा। दिस विल बी योर मेजर, ये CH3 ऐसे रहेगा। अच्छा, ये CH3 आप लोगों ने रखा है कि नहीं रखा है? कुछ लोगों ने शायद लगता है CH3 यहाँ से उड़ा दिया। नहीं नहीं, सामिया के में है, सारा आपने CH3 रखा है। कुछ लोग जज्बाती होकर हटा देते हैं वहां से CH3। ओके, वाफिया ने भी रखा है, फातिमा ने भी रखा है, रजान, चलिए वेरी गुड गाइस, ऑल ऑफ यू। बाकी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? सारा सही है। ओके, नाउ राइट Setzeff rule। व्हाट इज Setzeff रूल? Setzeff जो है ना, इसको बोलते हैं, Setzeff है जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया था, दैट ही वाज नोन एज Zaitsev। नहीं मतलब, नहीं ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं, क्या बताएं आपको, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? वैसे तो विलियम शेक्सपियर कह के चले गए व्हाट इज इन द नेम, बट देयर आर सम थिंग्स इन द नेम। जो ये बंदा था कहाँ का होगा ये बताइए तो, टेल मी, किस कंट्री का होगा ये? टेल मी। Germany. नहीं, नॉट जर्मनी। हमको नहीं पता, हम भी तुक्का मारेंगे वैसे तो, मतलब लास्ट जब हमने Setzeff रूल बताया बढ़ाया होगा तब हमने पूछा होगा, बट और बताइए। आई थिंक ही विल बी रशियन।
ये दिख रहा है आपको I was सेव? doing same thing, but I thought it was wrong. नहीं नहीं, रशियन ही होगा ये. Markonikov, right? He's also Russian. Who else we have? I don't remember right now. Okay, so we have Sidzefruit. ये बंदा जो था ये नाम अपना ऐसे लिखता था लेकिन सबसे बुलवाता था ऐसे, ठीक है? वो लिखता था ZAITSAV लेकिन सबको बोलता था बोलो हमको Sidzef, okay, not Zedsev, ठीक है? Kind of weird thing, but I don't know how Russians work. Okay, right? During elimination, reaction. Hydrogen from that carbon is removed. Which bears lesser number of hydrogens. And forms more substituted alkene, यानी वो alkene जिसमें ज्यादा number of alkyl groups attached हों. Right, next, in elimination, more substituted alkene is preferred. And always more substituted alkene is more stable because it can give you more number of hyperconjugating structures. Then everyone, yes or no, please tell me. Yes, sir. Okay. Now write a question. This is a very important question. Please write reaction of haloalkane. Reaction of haloalkane with aqueous KOH. Reaction of haloalkane with aqueous KOH gives alcohol. But reaction with alcoholic KOH क्या देता है alcoholic KOH के साथ? Tell me guys, what does it give with alcoholic KOH? अभी रिएक्शन कर रहे हैं हमने हाइड्रोअल्केन का अल्कोहलिक KOH के साथ, क्या देता है? What is the product? Gives, हाय हाय कहाँ है बस, सारे बच्चे पता नहीं कहाँ है. क्या पाई? अरे पाई बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? हाँ पूरा बोलिए ठीक से, स्पेस बार थोड़ी ज्यादा देर तक दबा के रखिए और बोलिए आराम से, किसी को सुनाई नहीं दिया. What do we say those molecule as? सारा, सामिया, रजान, वाफिया, टेल मी. कार्बन जिसमें पाई बॉन्ड होता है क्या बोलते हैं उसको? हाय हाय कुछ नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. Guys, what happened? Sorry. Sarah, reaction with alcoholic KOH gives what? When haloalkanes are treated with alcoholic KOH, it gives Alkene. alkene भाई लोग, alkene. इतना सारा प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम तो पता होना चाहिए ना. You should know this product is alkene. Okay. And we have also seen aqueous KOH when we are doing substitution, nucleophilic substitution reaction. Okay. In that we saw that
Aqueous KOH is going to give alcohol. Aqueous KOH, even if you have aqueous NaOH, it is going to give you alcohol. But alcoholic KOH is going to give you alkene. Why? Please write. Since alcoholic KOH contains alkoxide ion, which is a stronger base due to larger size and high charge density. Due to larger size and high charge density. Since alcoholic KOH contains alkoxide ion, which is a stronger base, due to larger size and higher charge density, it can, it can eliminate hydrogen from beta carbon of haloalkane. Beta carbon of haloalkane, forming alkene. Okay, so this is one part of the answer. The next part that you have to write, but in aqueous KOH, hydroxide ion is present. Which is a weaker base, and since it is a weaker base, it is a good nucleophile. Weaker base and good nucleophile. Good nucleophile due to smaller size and low charge density, not high, and low charge density. Hence, it prefers substitution over elimination. It prefers substitution over elimination via and forms alcohol. When reacted with haloalkane. Okay. Now, I will also tell you which are the important words and the crux word that you should have in your answer whenever you are writing the answer. So this part, stronger base. क्या है stronger base? ये तो होना चाहिए alkoxide ion, stronger base, है ना? And that is why it can eliminate. This is an important. Even if you leave this larger size and higher charge density, that is fine. But you should write these three things. Alkoxide is stronger base. That is why it can eliminate. ठीक है. अब उसके बाद सारा चीज जो है ना वो सजाने के लिए आंसर को. ठीक है. For example, अब देखिए alcoholic KOH, it contains alkoxide ion. ना? That is a stronger base. उसकी वजह से it can eliminate. And what does it eliminate? It eliminates hydrogen. From where does it eliminate hydrogen? From the beta carbon. Beta carbon of what? Beta carbon of haloalkane. And what does it form afterward? It forms afterwards alkene. So the important things that you have to learn in this thing is what? Alkoxide, stronger base, hence elimination. ये रूल को आप याद रखिए. ठीक है. Next, in the next paragraph, you have hydroxide ion. ठीक है. Weaker base. ठीक है. And hence it prefers ये line आपका substitution.
prefers substitution. And what does it form? It forms alcohol and all. These things are secondary. Okay, so the primary objective that you have is to relate between these three things. You have alkoxide, stronger base, elimination. Hydroxide, weaker base, substitution. और elimination से product क्या form होगा? Alkene. Substitution से होगा alcohol. ठीक है? So this logic you have to remember. सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है? तो सोचते हैं कि सर इतना बड़ा आंसर है, 1 मार्क्स में आता, पता है आपको? This will come in 1 marks. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और सारे क्वेश्चन, हम तो बोलेंगे 99% क्वेश्चन अगर आपके 1 मार्क्स में आ रहे हैं तो सारे ही क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहे हैं, राइट? ऑल द क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, नो नॉट इन एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोर्ड में जितना भी सवाल आएगा सब 1 मार्क्स का होगा, एवरीथिंग. इवन इफ दे आर पुटिंग इट, मत सोचिए कि 10 मार्क्स के 10 सवाल आएंगे 1 मार्क्स के. इवन इफ दे आर हैविंग सम ऑर्गेनिक क्वेश्चन इन 3 मार्क्स सेक्शन, दे विल गिव यू 3 पार्ट्स, 1 2 3. आपको 5 मार्क्स के भी सवाल मिलेंगे, लेकिन 5 मार्क्स का सवाल कैसा होगा? ए आपको कुछ यहाँ पे रिएजेंट दे देंगे, बी दे रहा है, बी से आपका सी, सी से आपका डी, डी से आपका ई. ठीक है? यहाँ पे R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया. तो दे विल गिव यू सम, यहाँ पे ABCDE में से कुछ आपको दे देंगे, कुछ छोड़ देंगे. 5 चीजें आपको याद मतलब देनी पड़ेंगे आंसर. एक दे विल गिव यू ए, दे विल गिव यू R1, वो पूछेंगे बी क्या है. ठीक है? उसके बाद दे विल गिव यू R2 एंड देन वो पूछेंगे सी क्या है, राइट? Then they will give you R3, then they will ask what is D, then they will give you R4 and then they will ask what is E. So you can see 1 2 3 4 5 6 6 चीजें पूछ सकते हैं आपसे इस टाइप के सवाल में. तो all the question in organic chemistry are going to be 1 marks only. तो रटना नहीं है प्लीज. ठीक है? लॉजिक याद रखिए, alkoxide ion, stronger base, and that is why elimination. Okay? अब हम आपको बताते हैं क्यों है ऐसा. ठीक है? One question that should come is, why is alkoxide ion is a stronger base and why it is giving elimination product, and why is hydroxide weaker base? Now whenever I'm saying stronger and weaker, I'm using what? I'm using the, वो क्या बोलते हैं उसको, comparative बोलते हैं ना, adjective होता है ना, good, better, best. तो उसमें हम stronger and weaker बोल रहे हैं, right? You should also focus on these things. I'm not saying that alkoxide is what? It is the strong base. It is a stronger base. It is a weaker base. Okay, so in comparison to hydroxide, alkoxide is what? The stronger. In comparison to alkoxide, hydroxide is weaker base. Okay. आप लोगों ने लिख लिया? All of you wrote the session. Please tell me. Yes. Yes, sir. Now listen, everyone. Let us see what happens in alcoholic KOH. In alcoholic KOH, you are going to have alcohol. Okay? That means you will be having plenty of, and general alcohol formula is ROH. But specifically, you will be having ethanol molecules here. Okay? Ethanol is the solvent. That is why we are saying alcoholic KOH. So I have added KOH into alcohol. That is C2H5OH. Okay? This is my ethanol. And इसमें हमने क्या डाला हुआ है? KOH. Here I have added what? Here I have added KOH. So here dissociation of this also happened because it is a solvent, right? It is a solvent. It will be in very high amount, and you will be getting two things here. What you will be getting? You will be getting CH3. I'm expanding this, CH3, CH2O negative. Okay. Now, first thing is the charge density. I want to show why it is having a very high charge density. All of you must know by now, CH3 is what? Electron donating group, right? It is going to donate electron. It is going to donate electron, and it is donating electron to this negative charge. So I am donating electron to negative charge. That means I'm increasing negative charge. Yes or no? Please tell me, guys. Clear? Yes. Okay. Now let us look at a particular haloalkane. A particular haloalkane. Acha, if the negative charge is very high, it will be what? Unstable? Yes or no, guys? Please tell me. It will be unstable? Yes. Yes, Okay. sir. Yes. Now I have something like this. Okay, we have something like this. Now, this is, first of all, it is big, and also it is how much big? Please see. This carbon atom ना, ये हम और आपको बड़ा बताते हैं. ये exactly कितना बड़ा हो सकता है? ठीक है, so it is quite big of a molecule. ठीक है, it's quite big of a molecule. Now,
what we are expecting it to do, we are expecting कि ये यहाँ पे अटैक करे और फिर Br यहाँ से निकले. That's kind of too much to ask, right? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. है ना? So what it does, it says that इतना मेरे पास धैर्य नहीं है. I don't have that much patience. I am very unstable. I need something very quickly. So he just adds, he just gives the electron to this hydrogen atom. It abstracts this hydrogen atom, takes away. This hydrogen atom gives the electron here. The Br negative goes like this away. Now you see why the elimination white is attacking on hydrogen. Yes or no? Please tell me, guys. दिख रहा है सबको? Yes. Right? Okay. Similarly, look at the very small hydroxide ion. When I am having what? Water, that means aqueous KOH. In aqueous KOH, I will just have OH negative. Right? If I will draw this, this will be HO, and this oxygen is having all the lone pairs and negative charge. Again, hydrogen is not very much. एक electron तो होता ही है इसके पास, ठीक है, कितना ही दे देगा ये, right? It will not give you much electron. That is why it is not having what? It is not having very high electron density, जितना alkoxide ion के पास है, right? And since it is not having very high electron density, it is not as unstable. It is unstable. It is unstable. I'm not saying that it is not unstable. Please, ऐसे मेरे बातों को मरोड़िएगा मत, ठीक है? It is unstable, but it is not as unstable as the alkoxide ion. That means it is more stable than alkoxide, right? OH negative is a bit stable than alkoxide ion. And if it is stable, then it is not in a hurry to react. And the other thing is that it can afford to attack here. Yes or no? Can you see that? Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Right. So please, if you want to draw this, please draw this. And I will say that one more thing I will draw. Ye attack is not possible. Make a cross like this. Okay, make a cross like this. It is not possible. Similarly, this attack does not happen with hydrogen पे attack नहीं करता है. This attack does not happen. Make a cross like this. Okay, चलिए. Write this down. I hope you understood that why alkoxide ion is a stronger base, because it is having a big size. And the concept now is very important. Like if there is a negative charge and that negative charge is with someone which is very big, okay, which is very big, that means it is what? It is a stronger base. It is going to, now what is a base? Base is something that is going to abstract hydrogen. Okay, organic chemistry, what is base? Base is going to abstract hydrogen. Bronsted acid base theory काम करती है organic chemistry में, because we have a lot of hydrogen atoms. Please let me know when you have written this. Done, sir. Done. Right, next, reaction with metals. Please write number 1. Reaction with magnesium.
Okay, reaction with magnesium. Please write. When alkyne halides reacts with magnesium in the presence of dry ether, they form a compound with formula RMGX called Grignard reagent. Okay, Grignard reagent. So we have a formula compound which is R, which is bonded to magnesium. This magnesium is further bonded to a halogen atom. Okay, so whenever you have, this is the carbon atom, R will be having carbon atom, and there is a bond with metal. If you have this fragment, then these molecules are known as organometallic compounds. Organometallic compounds. Okay, write this down. Okay, now something that is very important about the organometallic molecules is that, please see, general आपने अभी तक whatever we have learned till now about carbon containing compounds, you must see the bond of carbon with hydrogen. This is one of the most common bonds. Please don't write anything here, okay? यहाँ से मत कुछ लीजिएगा. Carbon and oxygen bonds you will see, because see, for example, COH है ना, alcohol के लिए होता है. Okay, then you have carbon and nitrogen bond है ना, NH2 आपका होता है, amines. You'll see this type of bonds, right? Then now we can see that these are the most common bonds that you are going to find. The next bond is also CC bond. Okay? Now in all of these bonds, see here the carbon is not having any charge. It is equally distributed between hydrogen and carbons. Here also it is equally distributed between carbon and carbon. But if you look at carbon and oxygen, oxygen is more electronegative, so it will pull the electrons, and this carbon will get delta positive. Here also nitrogen is more electron, so nitrogen will pull the electron, carbon will get delta positive. But when you have carbon and metal, for example, carbon and magnesium, okay, so in this case you are going to see only this. Otherwise, अगर आप आगे पढ़िएगा chemistry, then you will also see carbon with lithium bonds. But let's not worry about that. You just look here, carbon and magnesium here. Okay, magnesium is a metal. Metal has a tendency to give electrons. So magnesium is going to give the electrons, and carbon will, for the very first time, it will get a negative charge. Can you see that? Yes or no? Please tell me. Okay, so this is very important. Why it is very different, and why we have called this as organometallic, and it has quite a important place in organic chemistry. And you will see that many reactions are possible because carbon is now having negative charge. Now, if carbon is having negative charge, now means carbon can attack somewhere. It is what? Electron rich. So electron source ban chuka hai carbon when you are having Grignard reagent. Okay, so you'll also see the preparation of alcohols in which RMGX is used in the next chapter, alcohol, phenols, and ether. There you will understand what is the importance of this particular molecule. Synthetically also, it is very important. Okay, almost हर chapter में आपको Grignard reagent मिलेगा. Okay, so see, I'm writing a general reaction how to make Grignard reagent. We have RX, any haloalkane. I will react this with Mg. And now my question to you, all of you, is what do you think is the state of dry ether? Is it solid, liquid, or gas? Tell me, guys. Dry ether is solid, liquid, or gas? Gas. Gas. Okay. Anyone else? Dry ether is solid, liquid, or gas?
ओके, टेल मी व्हाट इट इज नॉट, वो क्या नहीं हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्या नहीं हो सकता है? लिक्विड नहीं हो सकता, लेकिन ड्राई ईथर इज लिक्विड ओनली। ओके, ड्राई ईथर क्या है, लिक्विड ही है। तो लेकिन ड्राई क्यों है ये? इट इज ड्राई बिकॉज दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ओके, सो वी डोंट हैव एनी वाटर इन, सो जनरली क्या होता है, ईथर जो है ना, उसको आप वाटर के साथ, इट इज सॉल्युबल इन वाटर आल्सो, so you should not have any water content here, and Grignard reagent should be prepared in the absence of water in anhydrous conditions. Okay, in anhydrous conditions. We'll also write this because it's also an important question. Okay, write some more example. For example, if I have CH3Br and I will react this with Mg in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, and I'm going to get CH3 between CH3 and Br. I will put a Mg and then I will write a Br again, right? So this is what you are going to make. For example, if you have CH3 CH2I plus Mg in presence of dry ether, you are going to get what? CH3 CH2 then Mg and then I. इसका नाम कैसे लिखेंगे? So generally it is ये आपका जो जनरल नाम होता है वो भी लिखता है. I will write all the names. Wait a second. Okay, so this is बिल्कुल आसान नाम होता है, alkyne, magnesium halide in general. यहाँ पे in place of alkyl we have methyl magnesium bromide. ठीक है, so what we are going to write? Methyl magnesium bromide. हाँ, यहाँ पे this will be ethyl magnesium iodide. You can even have a haloarene plus Mg in the presence of dry ether. Same thing you are going to do. You have a benzene ring. Between the benzene ring and chlorine, you are going to put Mg and then you are going to have chlorine. This will be phenyl magnesium chloride. Okay. Right, next. Grignard reagent is always prepared. Write a question. Is always prepared in anhydrous conditions. Explain. Please write. This is very important question. Okay, this has been asked at least 3 or 4 times in the last 10 years. Please write the answer. Since Grignard reagent, please आप लोग पूरा लिखिएगा. Grignard reagent is very reactive. Very reactive in nature. Due to which it reacts. Due to which it reacts even with moisture and gives alkane. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप क्या बनाना चाह रहे हैं? आप बनाना चाह रहे हैं CH3Br से in the presence of magnesium. ठीक है, आपने ड्राई ईथर नहीं लिया, आपने ऐसे ही बना दिया. You will get CH3 Mg and Br. मान लीजिए there is some moisture there. So moisture means you will have water. Water means HOH. Water, right? Now this H is going to be delta positive because oxygen is pulling electrons. This will be electron negative, delta negative.
Now here carbon, which is what? Delta negative, because magnesium is there, it is giving it electron. So carbon is going to attack onto this hydrogen, and what you're going to get? You're going to get C. The carbon is going to attack the hydrogen, and this carbon magnesium bond will break. You will get CH4. That means you're going to get alkane plus MgBrOH. This is not very much of use, but we can see that हम लोग को Grignard reagent बनाना था, but if I have water, it will react and it will form alkane. So water is very harmful. Whenever you are having Grignard reagent, please remove water. Okay, please remove water. In general, we can write Rx to show this reaction. If you have RMgX, if you have RMgX in the presence of H2O, it is going to make RH. R is the general formula for alkene plus MgX OH. Please write this down. Let me know when you're done. Then guys, listen to please tell me. Yes, sir. Okay. We have seen one reaction with magnesium, right? The another reaction, that is reaction with sodium. Here we are going to see 3 reactions. Write the number 1 reaction. What's reaction? Please write for this. When two same haloalkane, haloalkane reacts with sodium, in the presence of dry ether, they form alkenes containing double the number of carbon atoms. And the reaction is called What's reaction? General reaction is going to be 2Rx plus 2 sodium in the presence of dry ether. Then you are going to get RR. Okay, R with a bond with R plus NaX. In general, ये तो general हो गया. Specific में देखिए, if you have CH3 Br and you react this with sodium. What is DE? आप बताइए क्या है DE? गेस कीजिए. Sodium. नहीं, अरे सोडियम Na होता है ना भाई. सोडियम कैसे होगा? स्टेटमेंट पढ़ के बताइए क्या है. Dry DE. ether. ठीक है, आप लोग ड्राई ईथर लिखिएगा, ठीक है ना. हमको एग्जाम नहीं देना, आप लोग को एग्जाम देना, ठीक है. याद रखिए ये बात. प्रेजेंटेशन ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है. अच्छा, लिख लीजिए थोड़ा आराम से. नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लिखने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट इंपॉर्टेंट. ओके, इट्स गोइंग टू बी अ बिट इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, आई हैव समथिंग लाइक दिस. आई हैव Br हियर. ओके, नाउ प्लीज सी दैट जो बॉन्ड बनेगा ना कार्बन कार्बन के बीच में, दैट विल बी बिटवीन दीज 2 कार्बन एटम्स. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? विल राइट Na. डोंट राइट एनीथिंग गाइस, ठीक है. अभी देखिए प्लीज कैसे बना रहे हैं हम. You will face this green carbon atom ना. इस स्ट्रक्चर को 2 बार लिखना है आपको. देखिए CH3 आपको कितनी बार आ चुका है? 2 बार आया है, राइट. या CH3 2 टाइम्स, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर भी आपके पास कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा. तो यही आप 2 बार लिखिए. एंड यू शुड फेस these green atoms towards each other. अगर जैसे आपने यहाँ पे बनाया तो ये ग्रीन एटम है, ठीक है. सिर्फ कार्बन एटम्स को देखना है. Br तो आपका कट जा रहा है, ठीक है ना. Br is going to NaBr.
उसके बाद अगर आप बनाइएगा तो आप ऐसे बनाइए, ठीक है। और आपका ग्रीन एटम कहाँ पे है, यहाँ पे, दिस इज योर ग्रीन एटम, जस्ट मेक अ बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है। So this is the way to make structure, and this is beautiful way. और you can make some ugly pictures also, that is fine, सही होना चाहिए। For example, ये है आपके पास, okay, you have Br here plus Na, you have to make the answer, you have to make the product double the number of carbon atoms, तो आप इसको 2 बार बना दीजिए। to identify where is the Br, जहां से भी Br अटैच हुआ ना उसको आप पॉइंट कीजिए, ठीक है। and you make this once again, you had Br यहाँ पे, you had Br यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में बस बॉन्ड बना दीजिए आप। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. Can you repeat? रिपीट, ओके। फर्स्ट थिंग इज दैट, क्या कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिफाई द कार्बन एटम कंटेनिंग, सामिया, Halogen. ठीक है। यहाँ पे बताइए कौन सा कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन था, 1 2 3 4 में, 2. 2 में था, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम, और सेम स्ट्रक्चर फिर से बनाइएगा, बिकॉज हमने लिखा है इट शुड कंटेन डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट, कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ पे आपके पास 4 थे तो प्रोडक्ट में कितना होगा, 8 होगा। सो विल मेक दिस वंस अगेन, 1 2 3 4, कहाँ पे था Br, फिर वाज द हाइड्रोजन 2। अब इन दोनों को आप बॉन्ड्स ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिए, बॉन्ड बन गया आपका, दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? In the previous question, you did not double it, right? अरे कैसे नहीं भाई, देखिए कितने कार्बन एटम्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी कार्बन एटम्स, चलनी 4. 4 4, कितने कार्बन एटम्स हैं, 4. 4 कहाँ से हैं, No, sir. 2. 2. 2, मार खाइएगा आप, भगा देंगे हम आपको क्लास से। 2 4 कर रही हैं, हमको गुस्सा आएगा सामिया। एक बार अच्छे से देखिए, फिर हम बहुत सारे सवाल दे देंगे आपको, ठीक है। बताइए कितने कार्बन एटम है यहाँ पे, जो सर्कल किया है हमने, 3. यहाँ पे 4. यहाँ पे 5. यहाँ पे 5. नहीं, गलत, डू यू हैव दैट पीडीएफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर? Yes, sir. हाँ, हमको एक्सरसाइजेस चाहिए कल। उसमें कितने एक्सरसाइज हैं, 2 एक्सरसाइज हैं। एक पहला एक्सरसाइज है किसका, कार्बन एटम्स का, राइट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पहला वही है ना। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का शायद, लेट मी सी, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाँ ठीक है। 11 सवाल है, आई नीड द आंसर्स टुमारो, ओके सामिया? Okay, sir. ठीक है। यहाँ पे कितने कार्बन एटम्स है बताइए तो, 8. यहाँ पे कितने थे, 7. तो भूल जाती हैं क्या आप, आपको अलग से वही होती है क्या अचानक अचानक से? यहाँ पे 4 बोल रही थी, ठीक हो गया आंसर, पता नहीं क्या होता है बच्चों को। चलिए, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, इन सबको आपको ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। ये ड्राई इधर रहेगा, प्लीज याद रखिएगा। बस मेक इट लाइक दिस,
CH3। यहाँ पे आपके पास क्या था, ग्रीन वाला आटम। अब कुछ इसी तरह से बनाइए, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे अगर आप ऐसे दे दीजिए CH3, ठीक है। दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ मेकिंग थिंग्स। CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, हाँ चलिए यहाँ पे CH3 दे सकते हैं। नहीं, यहाँ पे मत दीजिए CH3, कहीं भी दे दीजिए आप CH3, यहाँ पे दे दीजिए, मान लीजिए CH3, ठीक है। आपको बस क्या ध्यान रखना है, ब्रोमीन आटम कहाँ था, एक कार्बन बार, बस यहाँ पे ब्रोमीन आटम रहेगा, इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड बना दीजिए, ठीक है। पोजीशंस याद रखिएगा गाइस, जरूरी नहीं है बिल्कुल आप इस तरह से बनाएं। दोनों आटम्स को अगर आप साथ साथ रखते तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनता, राइट। बट जरूरी नहीं है आप ऐसे बनाएं। What you should keep in mind, you should keep in mind that the Br and CH3s are one carbon, like उनके बीच में कोई कार्बन आटम है ही नहीं, राइट। दोनों एडजेसेंट कार्बन आटम्स हैं। कुछ नहीं, अगर आपने CH3 यहाँ पे दे दिया है तो Br कहाँ पे था, यहाँ पे Br था, है ना, एक कार्बन बगल में। दूसरा मॉलिक्यूल आपने बनाया, कहीं पे भी दे दीजिए आप CH3, सबसे अच्छा होगा यहाँ पे दे दीजिए CH3। अब जब यहाँ पे आपने CH3 दे दिया, यहाँ पे मत दीजिए ना, यहाँ पे सही नहीं रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा, यहाँ पे सही रहेगा। तो फिर आपके पास यहाँ पे Br था, एक कार्बन एडजेसेंट कार्बन, बस इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। छापिए छापिए, जल्दी छापिए। देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। सर हाँ बोलिए। आपने CH3 जो नीचे लिखा था, तो on the, could you write it down and then make the bond slanting bond? Is it allowed? हाँ वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ा सा टीचर को हार्ट अटैक आने की आशंका है बस। ऐसे बोल रही है ना आप? Yeah. हाँ ये भी चलेगा, इट्स नॉट, आई मीन मतलब गलत नहीं है, Okay, sir. ठीक है। बी कंफर्टेबल इन दिस, ओके। ये सारी चीजें स्ट्रक्चरली सही हैं तो सही है आंसर आपका, ठीक है।